Prime Minister Kishida, President Biden and Prime Minister Modi, firstly can I thank you for your sincere congratulations on my election as Australia's 31st Prime Minister. It is an honour that this is my first act as Prime Minister to attend this important Quad Leaders meeting here in Japan. And as we gather today, I acknowledge all that the Quad has achieved. Standing together for a free, open and resilient Indo-Pacific region, and working together to tackle the biggest challenges of our time, including climate change and the security of our region. My government is committed to working with your countries, and we are committed to the Quad. The new Australian government's priorities align with the Quad agenda, taking action on climate change and building a stronger and more resilient Indo-Pacific region through better economic security, better cyber security, better energy security and better environmental and health security. Our cooperation is built on the values that we share: a commitment to representative democracy, the rule of law and the right to live in peace. Today we look ahead to the work we're yet to do. As the Indo-Pacific is reshaped, our Quad partnership is needed now more than ever to meet the challenges and threats of a less certain world, to shape that world for the better, and build a stronger, more cooperative Indo-Pacific region that respects sovereignty. The region is looking to us to work with them and to lead by example. That's why my government will take ambitious action on climate change and increase our support to partners in the region as they work to address it, including with new finance. We will act in recognition that climate change is the main economic and security challenge for the island countries of the Pacific. Under my government, Australia will set a new target to reduce emissions by 43% by 2030, putting us on track for net zero by 2050. We have had a change of government in Australia, but Australia's commitment to the Quad has not changed and will not change. And our commitment to ASEAN and its centrality has not changed. My government has already committed to a greater focus on Southeast Asia, including the appointment of a special envoy for the region and $470 million in additional foreign aid over the next 4 years. This is in addition to our increasing assistance to the Pacific by over $500 million, deepening our defence and maritime cooperation and using the power of proximity to strengthen our partnerships. We will bring more energy and more resources to securing our region as we enter a new and more complex phase in the Pacific's strategic environment. And we will continue to stand with you, our like-minded friends. And collectively, we will continue to stand up for each other. We will stand firm on our values and our beliefs, on what we know will enhance the stability and prosperity of our region, and what is firmly in the interests of all those who call the Indo-Pacific home. I'm honoured to be among such close friends of Australia, to take these next steps with you to pursue positive and practical ways to support a free, open and resilient Indo-Pacific. I look forward to strengthening our Quad partnership, starting with a productive meeting today. And I'm delighted to hand over to Prime Minister Modi. はい、アルバニージー首相ありがとうございました。では次はモディ首相よろしくお願いします。Your Excellencies, प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना
मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।はい、モディ首相ありがとうございました。それでは続いて、バイデン大統領、ジョーよろしくお願いします。It's wonderful to be together with friends and at this transformative moment in the world, and we are at a transformative moment. Prime Minister Kishida, I want to commend you for the extraordinary leadership that over the past few months that you've shown and for the gracious way in which you've hosted all of us. And Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on a plane, you were sworn in, got in a plane, and if you fall asleep while you're here, it's okay. Because I don't know how you're doing it, but it's really quite extraordinary. Just getting off the campaign trail as well. Congratulations on your election. As I told you when you won, I called you that we greatly appreciate your commitment of being here so soon after taking office. Quad leaders met for the first time just over 1 year ago. It seems longer, but today our partnership is central to achieving our goals and critical for the foundation of our continuing cooperation, in my view. We already accomplished a great deal, as was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security, more to do, to state the obvious, partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship Program, which I think can make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are.
The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. Russia's assault on Ukraine only heightens the importance of those goals. The fundamental principles of international order, territorial integrity and sovereignty, international law, human rights, must always be defended, regardless of where they're violated in the world. So the Quad has a lot of work ahead of us. It's the fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague, ensuring that technologies of the future are governed according to our values, But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you. तो चारों ही नेताओं की तरफ से आपने ओपनिंग स्टेटमेंट सुना, किस तरह से जो चाहे वो जापान की तरफ से हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, सभी ने ओपनिंग स्टेटमेंट जिस बात का जिक्र किया, मैं एक एक करके उस पर आ रहा हूँ। फूमियो की ये कहा गया कि आसियान और ख़ासकर जो साउथ एशिया है उसकी प्रॉस्पेरिटी हो, फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने खासा जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज पर हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़, ओपन और इंडो पैसिफिक पर हम सभी का जोर होना चाहिए। उन्होंने भी क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, खासकर आइलैंड कंट्रीज़ को लेकर, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और उन पे ख़तरा है। हमें इस बात को समझना और इस पर काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, हेल्थ एंड सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जिक्र किया। भारत की तरफ से ये विशेष तौर पर यह कहा गया कि क्वाड ने पूरे वैश्विक पटल पर एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, एक अहम स्थान है क्वाड का, और इसका कहीं ना कहीं जो स्वरूप है वो प्रभावी हुआ है। इसको लेकर विश्वास की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, उत्साह की बात आती है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। उसके बाद आपसी सहयोग में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात होती है। उन्होंने वैक्सीन डिलीवरी की बात कही। क्लाइमेट जो चेंज है उस पर भी भारत का रुख रहा कि किस तरह से इसको लेकर भी हम सभी को मिलकर काम करना है। डिज़ास्टर रिस्पांस को लेकर हमारे जो क्या कुछ रोल हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के साथ इस पूरे क्वाड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी क्लाइमेट चेंज की बात आई, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात आई। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इंडो पैसिफिक में हमने कहा कि वी आर द पावर्स ऑफ इंडो पैसिफिक, और एक शेयर्ड वैल्यू है, एक शेयर्ड विज़न है हम सभी का। उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव
इंडो पैसिफिक हो, इस बात पर हम सभी का जोर होना चाहिए। और टेरिटोरियल सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इन तमाम विषयों पर चारों देशों के नेताओं ने जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उस बात का उन्होंने जिक्र किया। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्षवी पंत हैं जो कि ORF से जुड़े हुए हैं। पंत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ डॉक्टर तितली बासु भी है, वो भी जुड़ी हुई हैं। हर्ष पंत सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, हमने देखा चारों नेताओं को हमने सुना जिसमें कि क्लाइमेट चेंज और फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात चारों नेताओं ने की। क्या लगता है आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक है, उसकी बात, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्वाड के, और इसीलिए इनको बार बार दोहराना, इनको रिटरेट करना, इनको अंडरलाइन करना इन नेताओं की जिम्मेदारी है। और कहीं पर वो इस बात को दुनिया को भी रिमाइंड कराना चाहते हैं कि ये क्वाड का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है और क्यों ये चार देश बार बार मिल रहे हैं, क्वाड बना है और क्वाड आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रिटरेट करना, उनको अंडर